Hello, Assalamu alaikum, students of class 10th. Hope students you are fit and fine at your home. Okay students, तो आज यहाँ हमने एक नया चैप्टर उठाया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन केमिस्ट्री सेक्शन में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो students in class 9th you have learned about various elements, and you have seen that these elements can be classified. These elements can be classified into metals and non-metals on the basis of their properties. Students, यहाँ पर मैं आप लिखूँ elements. ये element है, element. Okay, तो element, as you know, it is a basic form of matter. Okay students, it's a basic form, it's a purest form of matter which cannot be split or broken down into simpler substance by any one of chemical methods. So this term element was given by Robert. जो term element है, it was given by Robert Boyle. Robert, who coined this term element? Robert Boyle. Robert Boyle coined this term element. Okay, so it's a basic form of matter, and also this Anthony Levison give experimentally definition of this element. ठीक है, that I have already said that it is a basic form of matter which cannot be split up or broken down into similar substance by chemical methods. तो ओके स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट है इन मॉडर्न डेफिनेशन एलिमेंट इज अ purest form of matter which is made up of only one kind of atoms. इसमें क्या होती है? Only it is made up of only one kind of atoms. Only element is the basic form of that contains only one kind of atoms. ठीक है, it is a basic form of matter that contains only one kind of atoms. तो उसके बाद on the basis of their physics, on the basis of their properties, physical and chemical properties, these elements can be classified into the three categories. जो element हैं इसको हम classify किया हमने on the basis of their properties into three categories. One is called metal. यहाँ पर students, one is metals. Okay. Number two is non-metals. They are generally classified metals and non-metals. And there are some category of elements. ठीक है, some category of elements which show property intermediate between metals and non-metals. These are called metalloids. उनको हम बोलते हैं students metalloids. These are few elements metalloids. या इसको हम बोलते हैं semi-metals. Okay, this is third one type of this element, metalloids, because they show properties intermediate between metals and non-metals. So students, this is the classification of metals. Classification of metals. Metals can be classified into three categories. Elements can be classified into three categories: metals, non-metals, and metalloids. ठीक है, तो on the basis of their physical properties पे हम ये क्लासिफाई करें. तो स्टूडेंट, लेट्स स्टडी वन बाय वन. पहले हम देखेंगे मेटल्स क्या है, उसके बाद हम नॉन मेटल देखेंगे. ठीक है, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज मेटल क्या होता है. ठीक है, मेटल अगर आप देखें इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट. ये एक एलिमेंट का काइंड है, इज अ काइंड ऑफ एलिमेंट और इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट. यहाँ लिखिए इज अ टाइप ऑफ metal is a type of element. Okay student, type of element which should be malleable. It is malleable. That is malleable. ठीक है, malleable, ductile and conducts heat and electricity.
तो ये जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी metal is a type of element, it's a type of element which is malleable या that is malleable, ठीक है, conducts malleable, ductile and conducts heat and electricity is called metal, is called can be called metal. Okay students, तो ये प्रॉपर्टी होनी जरूरी मेटल के लिए, याद रखना स्टूडेंट्स। मेटल एक तो malleable, that's malleable you know, malleable means that metal can be beaten into thin sheets, metal can be beaten with hammer into thin sheets called malleable. And this ductile means ductility, yeah, ductile means is a property of metal, that metal can be drawn into thin wires, metal can be drawn into thin wires, इसको हम बोलते हैं ductile. And you know heat and conducts heat and electricity, जिसमें heat पास होती है या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो उस चीज़ को हम, ये चीज़ याद रखना जरूरी स्टूडेंट्स। मेलेबिलिटी, मेटल के लिए ये प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी एक तो मेलेबिलिटी, नंबर सेकंड है डक्टाइलिटी, डक्टाइलिटी एंड conduct, and number third is conducts heat and electricity, conductivity of heat, conductivity of heat, conductivity of heat and electricity. तो ये जरूरी, ये प्रॉपर्टी इनके लिए, कंडक्ट्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल के लिए जरूरी है, तो उस सबस्टेंस को हम बोलते हैं मेटल, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पर मैं बताऊँ स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स कुछ एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स यहाँ पर अगर लिखी है, एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल आयरन है, ठीक है, अल्युमिनियम, कॉपर, ओके, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड लिख सकते भी, गोल्ड, जिंक, ठीक है, मैग्नीशियम, ये भी मेटल है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो ये these etc. So these are the common metals which are available in the, which are easily available in the laboratory. तो याद रखें students, what is metal? Metal is a type of element which is malleable, which should be malleable, ductile and conducts heat and electricity. This is called a metal. And metal also reflect light. It reflects light. तो अब देखेंगे हम students what are the physical properties of metals. हम physical property आप discuss करेंगे. What are the physical properties of metal? हम classify का elements मैंने अभी बताया कि जो elements are they can be classified firstly into metals and not metals on the basis of their physical properties पे हम इनको क्लास physical property, तो इनकी property different है, physical metals की अलग है और non metals की अलग property, physical property। तो हम discuss करें one by one। पहले हम देखेंगे physical properties of metal, उसके बाद हम देखेंगे physical properties of नॉन मेटल। तो नॉन मेटल यहाँ सिंपली याद रखना, नॉन मेटल इज द टाइप ऑफ एलिमेंट विच इज नॉट मेलेबल, इसका अपोजिट है विच इज नॉट मेलेबल, नॉट डक्टाइल एंड डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल ऑल दिस एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, कार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो बहुत सारे नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट होप यू अंडरस्टैंड दिस मेटल, व्हाट इज मेटल, एंड अब उसके बाद हम देखेंगे अगले क्लास में physical properties of metals. Okay, so I hope you understand this. Thank you.